Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you, and welcome to my lectures. Once again, welcome students. Subject is biology and class of 9th, chapter 2. As you people know, we started chapter 2 and we were in the mid of the this class, this lecture, this chapter 2. So students, we were in the mid of this chapter, solving a biological problem. As I told you, what a biological problem is, how to solve it. Then we discussed the biological method, that what the method is to solve the biological problem. That process, that procedure, that method is known as a biological method. And there were many steps involved in this biological method to get the result for a biological problem, to get a solution for a biological problem. But students, we discussed many of them. We have many steps in biological problem, like the observation, making hypothesis, and then we have prediction, experiment, then we have scientific theory, then we formulate in last we formulate scientific laws. But dear students, we discuss that observation, types of observation, hypothesis formulation, that we formulate hypothesis. Then we did the prediction as well in previous lectures. But what the topic of the day is, today we have another chapter topic. The next step for the biological problem is experiment. So today's topic we have that are experiments, experiment, testing. Okay, how to test someone to something, analyzing, reporting the result, साइंटिफिक थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमारा आज के लेक्चर का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए. देखो, पिछले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 के मिड में जा रहे हैं. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, क्लास 9th बायोलॉजी का, जो कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. और इसी में हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन किया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं. फिर जिस प्रोसेस के ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मेथड्स बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी के ज़रिए होता है. और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में फिर बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स में से कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि ऑब्जर्वेशन था, हाइपोथेसिस थी और प्रेडिक्शन था. अब प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन मतलब डिडक्शन है. अब जो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, जो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दे दिए हैं, अब उन हाइपोथेसिस में से हम देखते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारे प्रॉब्लम के ज़्यादा रिलेट है, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज मोस्टली रिलेट. जो हाइपोथेसिस रिलेट नहीं है, जो हाइपोथेसिस हमें रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर हमारा ये ख्याल है, तो उन हाइपोथेसिस पर हमने काम ही नहीं करना है. उन हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं या उन हाइपोथेसिस को हम डिडक्ट करते हैं, साइड पर रखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. जो हाइपोथेसिस हमारे थोड़ा बहुत हमारे रिजल्ट के करीब हमें नज़र आते हैं, उन हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, दैट हाइपोथेसिस विल बी टेकन टू टेस्ट. ओके, उन हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के नीचे लाते हैं, उनको हम उन हाइपोथेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, काम करते हैं उन पर. तो प्रेडिक्शन तक जो टॉपिक था हमारा वो हो चुका था. सो द न्यू टॉपिक फॉर द टुडेज एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग. आफ्टर दैट वी विल डू एनालिसिस, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, scientific theory and scientific law. So come toward the topic that is experiment or testing, we can say. What experiment is? Experiment may be correct or wrong. Experiment, when we have any biological problem, for example we have coronavirus nowadays, this is an example of biological problem. So this biological problem will be taken into the laboratories, it will be tested, it will go under the experiments, different types of experiments we will do on this.
आजकल जो कोरोना का जो इशू है, जो वायरस पाया जाता है, व्हाट द डिजीज इज काज्ड बाय दिस वायरस, उसको हम एक्सपेरिमेंट उसमें जा रहा है, सेशन में जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट फेज में है। इस पर अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको हम एक्सपेरिमेंट में लाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट को जब हम किसी चीज़ को, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को उठाते हैं और उनको देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमारे पास जो डिजीज़ है, उस डिजीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन द लेबॉर्ट्रीज बाय डिफरेंट वेज, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस, हाइपोथेसिस में बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग। हम किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा टेस्ट जो है ना, वो रॉन्ग भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। हाइपोथेसिस में बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हमारे पास इनकरेक्ट हाइपोथेसिस हैं तो वो रिजेक्ट किए जाते हैं थ्रू द टेस्ट, थ्रू द एक्सपेरिमेंट। न्यू हाइपोथेसिस इज सेलेक्टेड फॉर टेस्टिंग। अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास पहले स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेथड में, और दूसरे में हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हमने कोई चीज़ देखा, फिर हमने उस पर अपना मफरूज़ा, अपना हाइपोथेसिस दे दिया। देन वी डू व्हाट, देन वी डू प्रेडिक्शन और डिडक्शन। फिर जो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दिया उनमें से हम कुछ निकाल देते हैं, साइड पर रखते हैं कि भाई ये हमारे टॉपिक से रिलेट ही नहीं है। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी डू एक्सपेरिमेंट। जो हाइपोथेसिस हमने उठाए हैं उन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के जरिए, टेस्टिंग के जरिए सम ऑफ द हाइपोथेसिस में बी करेक्ट और सम में बी रॉन्ग। जो करेक्ट हो जाते हैं हमारे पास, उनको हम फर्दर टेस्टिंग्स के, फर्दर एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, फर्दर टेस्ट से गुजारते हैं, टेस्टिंग से गुजारते हैं लेबॉर्ट्री में, उस पर मजीद टेस्ट करते हैं, उस पर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो रॉन्ग हो जाते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। सो द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, न्यू हाइपोथेसिस इज सेलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग। Experiments are carried many times until result of the problem is not got. Okay, हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं एक हाइपोथेसिस को, एक थ्योरी को, जब तक हमें रिजल्ट न मिल जाए उस प्रॉब्लम का, हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं। द नेक्स्ट, what experiment is the most basic step of biological problem, biological method is experimentation. Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not, either they are wrong or right. They do experiment for this. The educations which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through the experimentations, biologists learn which hypothesis is correct and which is not. यही तो मेन ख़ास बात है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, बायोलॉजिकल मेथड में। बायोलॉजिकल मेथड में बेसिक स्टेप भी यही है कि जब हमें इंफॉर्मेशन और हाइपोथेसिस और प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, जब हमें एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं, ऑब्जर्वेशन और जो है ना, हमें ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, आफ्टर दैट वी डू एक्सपेरिमेंट। फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मेन जो स्टेप है वही है। इफ़ वी डोंट डू एक्सपेरिमेंट देन वी विल नॉट बी एबल to get the result, to get the accurate result. So experiment is the basic step of the biological method. The scientists do, the biologists do the experiment, the testing for to know either the hypothesis is wrong or correct, wrong or right. Okay, so after that, when the scientists do the experiment, then they analyze it. What they do, facts and figures are collected in the form of data. What the
figures and what the facts are obtained from that experiment, that will be collected in the form of data. उनको एक डेटा का फॉर्म दिया जाता है, एक शेप दिया जाता है इंफॉर्मेशन का. दिस कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज, फिर इसी डेटा को एनालाइज करते हैं. व्हाट द डेटा, व्हाट द इंफॉर्मेशन we get from the experiment, that will be analyzed. Data is compared statistically, mathematically it is compared. इस बात का मतलब ये हुआ कि डेटा इज कंपेयर्ड स्टेटिस्टिकली. स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ आई थिंक मैथमेटिक्स. ये एक मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिकली हम नंबरिंग को काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया पर या कोरोना पर हम काम कर रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं स्टेटिस्टिकली. कितने पेशेंट हैं, कितने सफ़र्ड हो रहे हैं, हाउ मेनी आर डाइड, हाउ मेनी आर सफरिंग, हाउ मेनी आर अफेक्टेड एंड हाउ विल बी अफेक्टेड. दिस इज नोन दैट द डेटा इज कंपेयर्ड statistically. Results are compared with the null hypothesis. The hypothesis which we have given before, which are rejected, which are rejected. So the result of the experiment will be compared with those of the hypothesis. जो result हमें मिल जाते हैं उनको हम दूसरे hypothesis के साथ भी compare करते हैं कि शायद उनके साथ भी मिलता हो. So the result through the experiments are compared with the hypothesis. If this proves then another hypothesis is selected. अगर experiment के नतीजे में result में if our hypothesis is disproved, if it is not proved, it is not proved according to the hypothesis what it is given, the result is different from the given hypothesis, so we leave that theory, we leave that hypothesis, and we select another hypothesis for further experiment, for further testing. Biological analysis is a scientific approach that combines analytical tools and biological contents in one place. Okay, a scientific approach, biological analysis. What we do in biological analysis, we collect the tools, the analytical tools, the biological content, what the information we have, what the tools are, जो भी कुछ भी है उन सबको एक जगह पर कंबाइन करते हैं. So informations are placed in one place. So researchers can obtain a fundamental, deeper and broader understanding of the biological relationship and the process known to be connected to experimental observations. Observation का मेन मतलब भी यही है कि हम मुख्तलिफ बायोलॉजिकल कंटेंट्स को एक साथ हम देख सकते हैं. तो उसको एनालाइज करते हैं and then we give them a form of data. What that is, then we report the result. What the result we get from the experiment, then we have to report it. How to report it? How to give, how to inform the people, how to inform the public, okay? How to inform the other biologists by such the results. For example, अगर हम कोई experiment करें किसी चीज़ पर और हम एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट हमें हासिल हो जाते हैं. अब रिजल्ट्स को बायोलॉजिकल मेथड में हम किस तरह जो है ना उसको हम रिपोर्ट करेंगे. हाउ वी विल पब्लिश, हाउ वी विल रिपोर्ट, हाउ वी विल इन्फॉर्म द अदर्स बाय आवर रिजल्ट. हम लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हमने रिजल्ट ले लिया, हमने रिजल्ट को एक डेटा का फॉर्म दे दिया. अब हम इसको लेबॉर्ट्री से बाहर कैसे निकालेंगे, बाहर मासेस पीपल में कैसे लाएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे. हाउ टू टेल द सोसाइटी, हाउ टू टेल द पीपल, हाउ टू टेल द पब्लिक. ये भी बायोलॉजिकल मेथड में जो है ना एक आई एम सॉरी, ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मेथड में एक स्टेप है. सो रिपोर्टिंग द रिजल्ट. After getting result, researchers share their views with each other. Okay, what the researchers do? For example, some of the researchers are doing research in a laboratory. When they get the result, they take out the result and they share with other scientists, with other researchers that such type of result we got. What do people think? What do people say on this? So they come and sit together and they give their views. They share their views on this. They discuss it. They do a discussion on this.
they publish a research paper in scientific journals or in books. After they do what they do, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, अब जो साइंटिफिक जर्नल है वो तो पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं इसको, एंड बुक्स भी सब पढ़ते हैं. एंड देन व्हाट दे डू, वो अपने रिजल्ट को उठाते हैं, जो रिजल्ट उन्हें डेटा के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट से हासिल किया था उसको एक जर्नल में या एक व्हाट वी कैन मैगजीन में या एक बुक में उसको पब्लिश करके then they inform the others by their result that such results we got from this experiment. Publishing is also integral part of the biological method. To publish the result is one of the most important step in the biological method. If you do experiment, if you do prediction, observation, hypotheses, experiments, and you get the result and you are not publishing, so it means your work is null, you have done nothing. अगर आप ये सब सारा प्रोसेस कर लें और आप रिजल्ट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, तो आपका सारा काम जो है ना वो यूजलेस है. सो यू हैव टू पब्लिश and your result on journals or on books or in by any way, by any means of what we can say transport. You can share your data. You have to share your data. This is the type of step of biological method. What the next is, that is the scientific theory. अब scientific theory क्या है? Scientific theory जो है ना एक theory होती है, एक सोच होता है, एक ख्याल होता है, और a scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that can be repeatedly tested and verified in accordance with the scientific method. जब हम बायोलॉजिकल मेथड में बार बार एक हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और वो बार बार सेम रिजल्ट देता है और वो करेक्ट प्रूव हो जाता है, और उसको फिर हम बार बार जो रिजल्ट हमें सेम रिजल्ट देता है उस हाइपोथेसिस को हम नाम देते हैं साइंटिफिक थ्योरी. यूजिंग एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स of the observations, measurements and evaluations of results, theories are structures if ideas that explain and interprets facts. अब क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी हमारे पास जो है ना वो परफेक्ट होता है, वो ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो बिल्कुल फैक्ट होते हैं. दे आर द फैक्ट्स, दे आर नेचुरल फैक्ट्स, दे आर tested many times, they are repeatedly tested. उसको बार बार टेस्ट किया गया है. जैसे कि हमारे पास मलेरिया है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है. अब इस बात को बार बार रिपीट करके उसको उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया है और यही रिजल्ट देता है. बार बार एक्सपेरिमेंट करके again and again they are giving the same result. Such type of hypothesis will be known as a theory. So that is known as a scientific theory. Proved hypothesis, ये जो है ना ये proved hypothesis है, इसको हमने prove किया है, बार बार प्रूव किया है, बार बार टेस्ट किया हुआ है. So they are proved hypothesis. What the scientific theory is? Scientific theory is proved hypothesis. Scientific theory is valid as long as there is no evidence to disprove. जब तक यह साइंटिफिक थ्योरी रहेगा जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना आ जाए. when you get any evidence against any scientific theory, then that scientific theory will be rejected. Otherwise that will be valid as long as we will not get any evidence that can disprove our proved hypothesis. Predictive theory, that is predictive and has explanatory power. कोई थ्योरी ऐसी थ्योरी जो एक्सप्लेनेटरी पावर रखता हो, जो प्रेडिक्टिव हो, जो करेक्ट हो, जो बार बार अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हो. सजेस्ट एंड न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, ऐसी थ्योरी जो मज़ीद सजेशन दे देते हैं, न्यू सजेशन देते हैं और डिफरेंट हाइपोथेसिस, साइंटिफिक लॉज देते हैं. अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और
constant fact of nature. So scientific theory is what that is proved hypothesis. They are valid as long as there is no any evidence to prove to disprove it. The last topic of the day is scientific law. What scientific law is? After establishment of a predictive theory, many questions are asked by the many biologists and scientists. So scientists also formulate new hypotheses to confirm this theory. It satisfy other scientists. अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है? आफ्टर स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी, जब आपके पास थ्योरी आ जाती है और थ्योरी में फिर जब आप प्रोडक्टिव थ्योरी आप हासिल कर लेते हैं जो कि एक वैलिड थ्योरी होती है, उसके बाद उस साइंटिस्ट जो है ना उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डिड यू गेट दिस थ्योरी. बार बार जब वो क्वेश्चन करते हैं टू कंफर्म दिस थ्योरी, वो और हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको हम साइंटिफिक लॉ नाम देते हैं. व्हाट साइंटिफिक लॉ इज? साइंटिफिक लॉ सेटिस्फाइज अदर साइंटिस्ट एज वेल. फॉर एग्जांपल, हम क्वेटा में कुछ साइंटिस्ट बैठ के इस हाइपोथेसिस को करते, किसी थ्योरी को, किसी रिजल्ट को हम साइंटिफिक थ्योरी हम क्रिएट कर लेते हैं. देन this theory must satisfies other scientists. If it satisfies other scientists of the world, so it means it is a scientific law. फिर ये एक law बन जाता है. When universally when world widely they satisfies other scientists, then it will be known as a scientific law. Also called law of nature. इसको हम law of nature भी कहते हैं. Why? Because this scientific law is actually natural facts, therefore it is known as law of nature. These are permanent rules of nature. So scientific laws are always the permanent rules of the nature. For example, the earth attracts objects toward its center. It's a natural fact, permanent rules of the nature it is. So this is a law. This is law. They are always true. Laws are always true. Scientific laws are always true. They cannot be wrong, false. If they are false, they will not be known as a scientific law. So permanent rules of the nature, always true theories, they are known as a scientific law. They are in the form of short statement. Laws, scientific laws are always in the form of short statement. वो एक statement में होते हैं because they are said by some of the scientists. They are universally accepted. Scientific law जो होते हैं, scientific law ऐसे theories होते हैं जो कि universally accept होते हैं, पूरे universe में accept होते हैं by all of the scientists, and they are accepted. Scientific laws are laws of the science, are statements based on the repeated experiments or observations that describe or predict a range of natural phenomena, natural processes. Scientific laws summarize the result of experiments or observations, usually within a certain range of application. तो यही scientific law होते हैं कि वो हमारे पास repeated experiment के results होते हैं, वो observations के results होते हैं, वो describe करते हैं एक natural phenomena की range को, कि एक natural process किस तरह होते हैं. Examples we have of the scientific law are the law of segregation, how the genes are segregate. These are the two laws of Mendel's, and the law of independent assortment, which we will discuss in class 10th inshallah. So these two are the biological laws, and the third we have, that is Newton law of universal gravitation. It is a law. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं, अलील ऑफ जीन्स जो होते हैं, अलील जीन्स जो है ना वो असॉर्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से. फिर जब न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर ये जीन जो है ना एक दूसरे से सेग्रीगेट होकर के वापस एक दूसरे से. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द साइंटिफिक law, and that is the end of the topic today. Students, if there is any confusion, you people can ask me in the comment box, and if you people
have any confusion, you can contact me on my WhatsApp number as well. If there is if you miss this video, if you misplace this lecture, you can watch it back. You can watch it later on my YouTube channel, Mohammad Rahim Khan Official. You can watch this video over there. For today it is enough. Inshallah, for tomorrow we will discuss, in the coming lectures we will discuss a case study of malaria, an example of biological method. कि एक biological method में हम अब biological method आप लोगों का, I hope you people understood it. I hope you people got it. If there is any confusion in biological method, you people can ask me anytime. Be ready for the for an example. जो हम biological method हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसमें एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे जो कि केस ऑफ स्टडी ऑफ मलेरिया है. अब हम मलेरिया फर्स्ट टाइम किस तरह काज हो गया, फिर उसको एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह कंसीडर किया गया, फिर बायोलॉजिकल मेथड उस पर किस तरह अप्लाई किया गया, और फिर जो है ना ये सारे जो स्टेप्स हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के पढ़ लिए, उस सारे स्टेप जो है ना वो मलेरिया के केस में किस तरह अप्लाई किए गए थे, इसको इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, thank you to all of you. We will see in the next lecture. Thanks to all of you.